So I know you people are excited to know who is my other guest. So let me introduce my new guest. And here is Laila Khan, the Pathan. Okay. So let me tell you before I start my interview, when I met Laila, I know her and she's my friend too. And she's like always very bubbly, energetic, and very positive person, very kind and loving type. But about her profession, I want to know much more about her. So Lala, let's everybody see. Everybody knows you like you're very kind-hearted, you're very bubbly, you're very sweet. But your profession, you have such a beautiful art in your hand. So give me your introduction, proper introduction. Let everybody knows. I am in this profession, Shagun, for around 24 years to be very precise. So 24 years I've been working, and it's never been a choice. I never wanted to be a hairdresser, I never wanted to be a beautician, I never wanted to be a makeup artist. It was all situational that it came and I had to adapt it, and of course I love it now. I was just around, I had finished my fashion designing from Sapphires in Mumbai, and I started my own label before I joined Begums. Okay. So the label was called Laila. I made garments, Western garments and Indian garments under the name of Laila. I had around 4 people working under me. So It is still there. no, I totally disconnected that. Okay. So they were working for me there, and because I wanted to be a fashion designer, like people said, you know, Laila, you wear good clothes, so why don't you start designing? Yeah. So I admire you. And the whole dressing. yeah, so I did that from Sapphires. I came back, started my own label, and because Hyderabad was not very ready-made oriented at that time. This I'm talking 20 years back. So we had only one store. I really don't remember the name because we didn't have Lifestyle and West Side and all those stores also before. So a lot of my Western outfit were very appreciated. But what used to happen when we used to give it to people, give it to stores, what used to happen, they used to take it on consignment basis, and then you never used to get money back. कपड़े बिक जाते थे पर पैसे नहीं आते थे. So a lot of problems used to come and all that, you know. So then mom told me, why don't you join my business? In घर का business से it's always very So nice. okay, so this is Begum's Beauty Parlor at Chiravali Lane, Abbotts, right? And this is started by your mom. My mom, 35 years. What is your mom name? My mom, Sheher Banu Kajani. Sheher Banu Kajani. So everybody must be knowing because it's a very famous 35 years old. Yes. It is a 35 years old beauty parlor, and she has joined since last 24 years. Oh, yes. So next year is going to be a huge party. Oh yes, inshallah. Yeah, inshallah. Supportively here, huh? Yes, it is here from my work. That's good. So Laila, I can see lot of glow, and means you day by day you're becoming very young. So now I'm getting some secret like Begum's Beauty Parlor आ जाओ और अपनी एज को रिवाइंड कर right? Look at Laila. Please give little close up to Laila. Please. So see, I can see your glowing face, no wrinkles, such a beautiful haircut with all the what you say highlights and all. So tell me about something, Laila. Like what is the correct age for any young girls to enter to the beauty parlor? See, I feel puberty. Women undergo a lot of hormonal changes. So when they start getting their periods, that the first time is the puberty when they come into it. That is the first time there's a lot of hormonal changes. Yes. So the age of 14, 15, 16 depends. So it's coming pretty earlier. So otherwise 16 years old, you see little eruptions, you see little pimples or little acne which is coming on their face. It's not for everybody, but for few people. Yes. That is when your things start. That is where you need, because your hormonals are changing inside. Your hormones are changing, and that is when you need a skin regime. A very basic skin regime. Right cleansing, right toning, right moisturizer, right cleansing also there from yes, that makes. Oh, There's yes. a myth saying कि no, इस young age में नहीं लेना. सफाई जरूरी है. See, what is cleanup? Cleanup is just cleansing, toning, It's not a moisturizing. facial, It's but not a it's facial. just a cleanup of all the With the right products. because of the population out. Oh, Pollution. Yes, it is it's very important. Cleansing with the right products. Like if you have an oily skin, we use seaweed here. If you have a little, tan skin, sometimes it happens when you're going out in the sun. So we have anti-tan cleanups. So cleanups is very important at that age.
From that age, From it that gets age, it started. is very, very important. And what you suggest, like after how long interval they have to come? Once a month. Once a month. Once a month. Once a month. All every age group or Every age group, maintenance is once a month. Treatment is once in 15 to 20 days. Depends what you have. So depends. First, you have to decide whether you're getting a maintenance done or you're getting a treatment done. So as soon as the girls' hormones change, Oh yes, you have to go in for cure. Maintenance is very important. I always believe prevention is better than cure. yes, You have to take care of yourself. yes, I agree. Like on this line, every doctor says, but actually it requires for your face and your tone body for everything. I Very, agree. very important. Completely agree with this. So Laila, I want to ask. So okay, so age I asked. Now tell me, there's different type of skin. Like tones, right? Like some have dry skin, some different Yeah, skin. different. See, So basically have we three, which is oily skin, dry skin combination, and now sometimes we have sensitive skin. Few skin, Yeah. you cannot do anything on the skin. They feel you cannot do anything. And why this acne and all occurs? What is Second hormonal. Second it is hormonal. the 100% hormonal. Your and skin yes, is because I saw people who get acne, they get lot of inferiority complex, you know. So is the treatment is 100%. 100% Oh yes, treatment is like 100%. Depends on what age you're coming. The earlier the acne, the earlier age of the acne, not your age, or the age of the acne. If you're getting acne initially and you come immediately within your 6 months की 6 महीने से आपको आ रहे 100% clear हो जाएगा. The longer you take, it eats up your collagen. So इसलिए you start seeing pores, you start seeing scars, Yeah, you start seeing it's- because it's eating up your collagen. So it is very, very important that the earlier you see a change superficially, either a pimple or pigmentation or tan, the earlier you come, repair is much easier. the final means you are getting the acne means Your sebaceous glands. okay. Yeah, your sebaceous glands. See, sebaceous glands are very, very active inside. Okay. Sebaceous glands is see, skin What is is made it? of skin is made up of oil Okay. and water. There are two things. People say oily skin को तो moisturizer नहीं लगाना चाहिए. हाँ. You normally use skin oily है moisturizer कैसा लगेगा? हाँ. It is very, very wrong. Oh, Even oily Is it? skin, yes, even oily skin needs moisturizer. Because skin is made up of oil and water. They are the two things. तुम्हारे sebaceous glands are which ज़्यादा excrete करते हैं तुम्हारे oil को. That's the reason your skin becomes oily. Your pores are clogged, and that's the reason you get acne. Acne is infection. Which you get that's a acne. more makes you mean to say like more than dry skin like which is the other skin you said? Dry acne and sorry, dry skin, oily skin. Oily skin gets more acne. Exactly. Chances are getting more acne. Acne there only because Oh. sebaceous glands are very active, Oh. and that's an infection which is there. Acne is an infection. Yeah, it's an infection. Usually So felt that. proper treatment is required, and as soon as you feel like you are getting some small rashes or pimples, Immediately attend. immediately you Yes. We have beautiful treatments. We have two types of treatments: chemical treatment and one non-chemical treatment. Chemical treatments which we do, which are the glycolics, which are the salicylic, which are stronger. So They are not harmful. No, they are not not harmful. harmful. But what happens? There's a lot of peeling in that. So when people come to us, they're very scared. Can your skin peel only? But when there is hyperpigmentation and when there's a lot of acne, then you have to go in for chemical treatments. So when clients come to us, we sit with them, we understand their lifestyle first of all. उनकी lifestyle कैसी है? food habit. Oh yes, food habit habits, affects their us. lifestyle, what it is, किस तरीके से they are doing, plus what products are they using. Because if I'm going to do a facial or a treatment, right products have to be used even for home care. If that is not done, facials are of no use because you're not maintaining. If you maintain, obviously you will see 100% results. And cosmetic have expiry dates also, right? Oh yes, 3 years maximum. Maximum. After Anything it- after expiry date shouldn't be used. You just pick it up and throw it in the dustbin. I to say 2 साल करो, 3 साल होती है shelf life, but it's always 2 What years. about lipstick? Lipsticks also, all cosmetics. See, once lipsticks are gone old, when you get it, you get a very different odor, very different smell. एक अच्छी भी smell आएगा थोड़ा सा. It's 100% sure. Cosmetics don't use more than 1.5 years. Maximum 1.5 to 2 years. Maximum. Mark Yes, this word should be because used there are many people, especially lipstick, if they are You don't use a lot. Lot, Like yeah. a red shade, you may not use it all the time. so they keep it and they keep it and You have to make sure. is it harmful or just it will not give glow or it will harm your lips like it will become dry or you never know. कभी-कभी क्या होगा reaction हो सकता है because the expiry date is over. So it's always better. It is always better.
Moisturizers nowadays, that's the reason you're getting in very small moisturizers. They don't give like bottles unless it is a hand and body lotion. You get it in big bottles. Otherwise, you get it in small tubes. Once you start using it, maximum 1.5 months, it's over. So always check expiry dates, manufacturing date. Also is Everything. You check the expiry date and you check the manufacturing. So Laila, I'm very impressed with you because see, I have seen most of the beauty parlor, they become very commercial and they don't tell the real thing. They just want ये करा वो करा और पैसा कमा लो. Okay, but I'm very impressed that the way you are. By the way, this new hairstyle is done by Laila, and it is just starting. You will get me different shagun after my groom up. Yes. That will come later, and I'm very excited for that. So let's come to the on a serious question. Why your mother? It is started by your mother, right? So why is she passionate about beauty and she was very उनको बहुत conscious थे कि skin अच्छी होना चाहिए. As I said, my dad is a doctor and he had a 100-bedded hospital. So पहले time Here in Aberson. And पहले ज़माने में नहीं था कि ladies kitty parties होते थे. Ladies used to meet up. There used to be so many activities. So for women, outing was only a movie and more of family, nothing to do with only women. Dad was a very busy person. हम लोग सब बड़े हो गए थे, then स्कूल जा रहे थे, तो nothing for mom to do. And she used to travel a lot, और travel करते थे लंदन. She used to stay over there. So she said, चलो ठीक है, वहाँ रुकी हूँ मैं वहाँ पे कुछ काम से, तो why don't I take courses? She was the first course she did it with Lilian Mont. Wow. Lilian Mont is a lady who actually treated Michael Jackson at that time to make him white. You must have seen he's a yeah, he was black and all. Oh wow! So she did. Auntie has taken in which year that is? I think around 24 years before 35 years. See, that time Auntie was so broad-minded and she has taken course from that. And this is 35 years old. Means before 35 years. Yes. So she was mentally advanced during that time. And she believed in beauty. What is Auntie's name? I want to full name because Sheher Banu Kajani. Sheher Banu Kajani. I salute to Auntie because see, people खाली बोलते हैं, सोचते हैं और आंटी ने करके दिखाया. कर दिखाया. I still feel very proud. Yeah. ये नहीं कि घर में बैठ के बोर हो रहे हैं और खाली खाना पका रहे हैं, खाली रोते रहते बोर हो रहे हैं. So and किया. और तो as a hobby she started just for time pass and it become a profession for her. Profession, yes. Then she enjoyed. क्योंकि क्या होता है जब clients तुम्हारे पास आते हैं and then you do either a haircut or a hair color facial, they feel good. तो दो चीज होती है, एक तुमको हमेशा याद करते जब भी mirror में देखते अरे इस makeup ने किया so I look good. So you're always there on your mind. Secondly, the satisfaction in the evening when you give the client a smile. किसी को smile देना बहुत बड़ी बात है and that's what Begum says. My client 100% they all can swear that we are very happy with us. So I personally make sure that my client should be happy. That is my basic one. Then only they will come back again and again. Yeah. It is not, I don't say proudly कि मैं ना advertisement नहीं. Let people know what Begum is. But till now I haven't done it. All Begum is only because of good work and good. Yes. Wow. Acha, tell me why you this Begum? Begum is a very catchy, very nice name. See, Begum say this usually look. I don't know. Even if it's beautiful, this is very sweet and It's typical Hyderabad. You say Begum. So who has chosen this and why you have chosen this? We were all Auntie has my mom. We were all kids, so Okay. I still remember Dr. Sultana auntie, she's a gynecologist. And since dad has a hospital, we all used to have dinner. So we were all having dinner and mom said, Salud bolna hai, main since maan karke aayi hu, so let me start with the naam kya rakhenge. So Sultana auntie said, Leila rakho. Mom said, नहीं Leila नहीं रखना है. Then say Leila beauty parlor, Leila beauty parlor. So very possessive, बेटी के नाम. Then she said, Begum's रखते. Begum's a very Hyderabadi word, and in Hyderabad, Begum's means a woman. हम बेगम बोलते हैं ना किसी को. मेरा तो कितना मतलब है beautiful name because now आप लोग तो अपनी वीडियो को बेगम बुलाते हैं, मतलब प्यार से बेगम बुलाते हैं. And it's very sweet word. It's very मतलब sweet and you feel like बेगम और बेगम से जाके सर्च किया है तो मतलब बेगम beautiful हो गई. And you know Laila, the best part is like I go to beauty parlor as I am staying in Sikandrabad and this is far away, so I have not been here. So I was asking my husband once कि अली ये कहाँ पे बेगम्स कहाँ पे मेरे को जाना है. तो चिराग अली में एक ब्यूटी पार्लर होता है. You're talking about Begums and
my husband is very, we see he never goes out and he's very in his own world. Then also he knows that Begum Beauty Parlor is there at Chirag Gali It's one of the landmarks. So how you know Masjid, that Masjid ke saath tum karte ho? I was thinking like that, you know, because he is not aware of women के मामले में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं aware, and he knows where his Begum is. Yeah, and like today when I was booking the cab also ना, मेरे चिराग वाली लेके चलोगे, like उन्होंने मेरे jeans उसका getup देख के उसको बोला आपको बेगम ब्यूटी पार्लर जाना है क्या? So I must say Begum is very popular. I'm very happy to know that, and and after seeing like the way your girls are working, and I'm really seeing it is this time also it is full of customers, and it shows. You're humble, but it is Shukrana Laka. So 25th Silver Jubilee is going to be, and inshallah that time must you never know ki inshallah never know ki I am very sure ki even your husband Firoz will win the election, and 25 years. Oh wow! So double dhamaka. Double dhamaka तो मेरे को special मतलब मेरा ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे बेगम्स में, और कॉस्ट्यूम लेके मेरे को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए. I'm very excited. Okay. Now on a serious note, I want to know, like you use your own homemade product, or so you buy from outside. So how you check the quality and which product you have to use, because see when you use that product it affect your nail. If they are having a good product, yes. It always depends. So what is the criteria of choosing the It product? depends on two things always. It's the product, the quality of the product, and how you do it. So both have to be there. How do you do it? It's up to me, because I go for continuous classes, continuous upgradation. With a lot of things which are coming in the market. So you go for workshops? Yes, I go for a lot of workshops, personal workshops. We now see, as we use an ultrasonic machine right now. Wow. The ultrasonic machine is basically, if the products are even good, penetration has to be there. If the products are penetrated, then you see results. So the product has to be given results. I am associated with a product called O3 Plus. O3 O3 Plus. It is Yes. Indian product? No, yes, it is an Indian product. It is made in Delhi. The proprietor is Mr. Vineet Kapoor, and I've been associated with this company for around 10 years now. I'm very happy with the product and I use that. I am a part of the Dream Skin team also. So I'm the only person from Hyderabad. Dream Skin team. What is that? It's a O3 Plus is made a Dream Skin team where we are 5 or 7 of us. One from Hyderabad, one from Bombay, Bangalore, so all leading over, cities. yes, all over leading cities they have. So they've chosen Begums and they've chosen me as wow. their salon. Achha, that is their choice to choose Their from choice. where. Oh, yes. They, Oh, yes. so they got to know about Begums and They came to me, I started. That is an achievement for you. Oh yes, they came to me, I started using their products, and after that, when they saw the efficiency of the salon, that they can take up their products with the results and do exactly the same what the company says with good results. Okay, then then they clientele, and then they come up to you and say, hey, we want you to be a part of the team. Oh wow. So we have our seminars, we have our conferences, once in 3-4 months in Delhi, Bangalore, Delhi and Bombay. So I go visit, upgrade myself all the time. And workshops, they only keep all. They only. Okay. So they call from out of country. Oh, yes, and they train you with their products. So I how get to trained use how to in a proper way. yes. So I get training, and then in turn I train my staff. Because I can't do all the facials. So I basically do a lot of training which my girls take off. But very progressive and treatments are very, very, very progressive. Okay. So this product is available in the market. Oh yes, it is available in the market. I mean, available in the market. But if you don't know how to use it, then no use. Like my type of people, I'm pakka anari, so I don't know. Bas main jaake le lungi And the company, see, when you give a facial, the company gives one kit. Cleanser, hair toner, hair day, hair. Speciality of Begums, the speciality what I do is I pick up a product, this guy, a product, this guy, वो product, this, and I make my own kit. तो कभी भी ये kit अगर तुमको बाहर भी मिलती है और ये facials अगर बाहर भी हो रहे हैं, तो I guarantee मेरे results और better होंगे with the similar. Because you add on. So I make my own facials using their products only and my experience. Naturally. कि मेरे को पता है इससे When your mother experience, you are adding in that. So I call them signature facials. So I make facials जैसा पहले ज़माने में पहले क्या अभी भी चलता है gold facial, platinum facial, diamond facial, ये facial, वो facials अभी भी है no doubt. But then I have signature facials which What is signature facial? I analyze your skin.
Okay. स्किन तुम्हारी एनालाइज में तुम्हारा एज होता है कि कितना एज है, योर एज एंड योर स्किन्स एज. समटाइम्स इफ यू हैवंट टेकन केयर ऑफ योर स्किन, यू आर यंगर बट योर स्किन इज ओल्डर. हाँ. सो वो एनालाइज होता है, वी चेक योर स्किन एवरीथिंग, उसका मॉइस्चर लेवल चेक करते हैं, उसका ऑयल लेवल चेक करते हैं, देन वी मेक अ फेशियल व्हिच इज गुड फॉर योर स्किन. So we call it a signature facial. So it's much easier and faster results. Okay, so that is not a signature. That is only in Begums, right? So like gold facial and platinum facial, they have a signature facial, which is their special. I want to know, you must be having many customers who still ask for auntie ka hand ka treatment only. Is there anything like that? There are few clients who They only they want only mom to cut their hair. They want only mom to advise them. so they take appointment कि अगर वो जब available है तभी हम आएंगे. बिल्कुल बराबर आते. And I have now 3 generations coming up to me. Okay. So I had the grandmothers and I had the mothers जिनके makeups मैं करी in my generation. I've done dolled them up for their bridal makeups, and now I have the small छोटे kids, 1-2 साल के जो haircuts को आते. So there was 3 generations. 3 generation is coming to Begum. It's so good. कभी-कभी 3 को आते हैं. दादी होती है, Cute. उनके साथ उनकी बेटी होती है, and then she come. She said, "लैला याद है तुम मेरा makeup करे थे 6 साल पहले, फिर मैं दुबई चली गई रहने को." 6 साल हो गए, क्योंकि कभी-कभी face नहीं याद रहता. She said, "देखो मेरे बच्चे हो गए 3 साल के." So I feel so happy to cut their hair. I said, "ठीक है, mom had treated Nani and Dadis. I was with the young girls, and now उनके बच्चे मेरे साथ." How sweet. So feel it's a very lovely feel. और आंटी को इतना एक्सपीरियंस है, तुम यू आर ऑल्सो गुड, वेरी गुड, बट नेचुरली आंटी का एक्सपीरियंस के आगे तो तुम डेली उनसे कुछ ना कुछ टिप्स लेते रहते हो, या आंटी आके देखते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता पक्का? आई एम श्योर. वेरी पर्टिकुलर. इनफैक्ट कभी-कभी मैं तो सैलून पे आके समटाइम्स आई सिट इन माय चेयर और इन माय ऑफिस वर्किंग. She is all the time on the rounds. Facial. She comes daily. Oh yes, daily she comes. She comes 1.5 hours in the morning and 1 or 2 hours in the evening. Okay. उतना ही आते. But whenever she comes, she straight away gets into the facial room. Facial room she'll check इसका facial हो रहा है तो कौन सा कर रहे हैं, क्या है, कैसा कर रहे हैं, फिर एक कुछ ऐड कर दो बोलते, कुछ करो बोले, या है कट So some tips देते जाते भी. Management staff, she's the only one who does it. Oh, 15 staff को handle करना it is not easy. Yeah. I still have a problem. She's the one who handles the staff. Okay. Easy to handle. क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा friendly हो जाती हूँ. But she But always says. then they take advantage. एक arm distance होना जरूरी है. बहुत Which she maintain. तो हम balance कर लेते. थोड़ा मैं इधर देख लेती, थोड़ा उधर देख लेते. That's हाँ, okay. एक प्यार करता है और एक थोड़ा एक थोड़ा गुस्सा करता है. नरम गरम से बैलेंस हो जाता है. Good, good. Discipline for her, cleanliness and hygiene and discipline. It's very Yes, very sir. important for her. For her, she says उसके बगैर कुछ नहीं होगा. काम है. But first is your hygiene and your discipline. वो 2 चीज रहेगा तो everything has to go. Very good, excellent. This is means look, people talk about hygiene and discipline mostly in schools and all, but of course beauty parlor में अगर discipline और hygiene Very and important. non-expiring products. Oh yes. These Everything are disposable. I barely use cotton. I barely use sponge in the salon. I हाँ, use only वो cotton. that is a good question. मैं मेरे को वो बड़ा जी वो यूज वो किया इस पता है कि तो वो अच्छी चीज़ वो तो यू लो Cottons, only cottons. हाँ Disposable woolen napkins, cottons, disposable strips for waxing, everything. Okay. Facials में तो no sponges at all. Okay. Unless until 2 treatments में कभी-कभी we need sponges क्योंकि cotton से नहीं निकलता है, so only that time we use sponges. Okay, तब तो. Otherwise we have 100% cotton. And as when we are talking in general, you said कि most your clients are most or not like hair straightening करने आ गए. They are mostly coming for treatment. Treatment based. Either Long hair, skin, treatment. it's treatment. So they have lot of faith कि मेरा ये जो है ये is like थोड़ा पापा का डॉक्टर वाला चीज आ गया है कि मतलब जिस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो बेगम्स में ही जाओ. It's a trust. मिस सॉरी इट्स लाइक अगर ब्यूटी पार्लर में खाली टेम्पररी अगर आपको ब्यूटीफुल फॉर अ टाइमिंग पार्टी में जाने के लिए, उससे ज्यादा यहाँ पे लोग ऐसे लोग आते हैं Yes, जैसे कि तुम बता रहे थे राइट. True. I don't have much of clients जो just it's wash and blow dry, which is हाँ. more clients नहीं होते. It's more of clients which I have my clientele is basically more of treatments with skin and hair दोनों. You won't believe they just come to me. They say, "This is Leila, this is what I need." आप मेरे को बोलो ये क्या होगा, क्या regime है. It's a trust, and this Begums has earned this trust. That is the biggest reward. They don't ask me what products I'm using. There are very few जो नए आते हैं. Obviously आजकल इतना वो हो गया है media, everything is on Facebook, Instagram, so they want to know, and it's nothing wrong. But then I feel proud when they're not bothered what products I'm using. They're not bothered what I'm charging. They have complete faith. They give you total faith, and that Yeah. leaves me with more of responsibility. That मेरे पे faith ज़्यादा करे तो मेरी responsibility और बढ़ जाती है कि मैं उनको और एहसास दूं. true, very true.
कहते हैं ना, with power comes a lot of responsibility. Yeah, So the power of they trusting in me, I have to be very responsible. And I'm sure they are going very happily. Yes, mashallah. they are very happy. Touch wood. Acha Laila, when my haircut was going on, they have done beautifully. Then I was doing lot of tanga and whatever. So now I have seen this Olaplex. Yeah. What is Olaplex all about? I was just reading, so I didn't get it properly. What is that Olaplex? This is a new treatment which has come out, Shagun. This is, we call it insurance for the hair. The company Insurance calls for it the insurance hair. for the hair. Yes. Okay. See, what is insurance? कि अगर तुम कोई बीमार हो जा रहे हो या तुम मर जा रहे हो, basically, you know, the wrong way of saying it, but this is how it is. तो you insurance होता है जो तुमको एक backup होता है. Yes. Right. So Olaplex is like a backup Okay. for your hair. Okay. So your hair can go weak. Can go damage. क्यों? क्योंकि first is pollution. जो कलर कुछ नहीं भी करता तो pollution होता है, जिससे होते हैं. Secondly, आजकल now everybody uses blow dryers, everybody uses irons, everybody colors their hair, highlights their hair. क्या करते हैं बालों में? Because they want to look different and they want to look nice. That is good also. That's very 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 good. Very We good. should ये do अच्छा है. I'm inspiring with the hair. See, Laila's beautiful haircut and Soon I put it good for her. yeah. So we do this. So this ensures that this basically your hair becomes very weak. So when you do a Olaplex treatment, a standalone Olaplex treatment, it makes your cuticles stronger. Okay. That is means roots. No, your hair, your cuticles basically. Achha, your cuticle hair, is your like cuticles and your okay, heads. okay. Elasticity becomes improves your elasticity of your hair, Okay. so that it prepares your hair कि to जब उसको खींचेंगे वो करेंगे तो वो थोड़ा मजबूत breakage नहीं होगा. ब्रेकेज नहीं होगा. वो जो बीच में दो मोड़ टूट जाते हैं वो वो नहीं होएंगे. Okay. You get a lot of volume in your hair, volume होएगा, softness होएगा, conditioning होएगा. So if you do this, it is very good. So this is supposed to be done every 20-25 days or maximum once a month to maintain your hair, and then it prepares your hair to get it colored again. Because तुम कलर पकड़ते रहोगे नहीं और करोगे. मैं उसका आप एकदम इलाज कर देते हो. अब फिर ये चीज उसके कराओ, फिर वो कराओ. तो ठीक है, Okay. तुम्हारे क्यूटिकल स्ट्रेंथन हो गए, फिर तुम अच्छा, ट्रिमिंग ऑफ हेयर मतलब कितने महीने के बाद मेरे लोग बोलते हैं कि ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए, जो मैं नहीं कराती थी. आज मैंने पकड़ के जबरदस्ती कर दिया. And I'm feeling off. I don't know you people are liking me or not, but I'm feeling off truly. So tell me about that. कि ट्रिमिंग मतलब कितने इंटरवल के बाद होना चाहिए, मंथ या डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कभी किसी के बाल बहुत खूब होते हैं, कभी किसके नहीं होते. पहले जमाने में जो बोलते ना, बाल काटो तो बाल लंबे होंगे, ऐसे नहीं है. बाल ऐसा नहीं, रूट myth से है. लंबे होते हैं, सिर्फ myth. लंबे यहाँ से होते हैं. नरिशमेंट तुम्हारे स्काल्प में अगर नरिशमेंट है तो तुम्हारे बाल बढ़ेंगे. और ऑब्वियसली बाल जब बढ़ते हैं, हर बाल एक ही लेंथ से नहीं बढ़ते हैं. सब लेंथ तो आफ्टर सम टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, अनटाइडी दिखता है. इट्स ऑलवेज नाइस व्हेनेवर यू फील कि बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अनटाइडी दिख रहे हैं, अटेंशन करा दो. इट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अच्छा डिपेंड. इट्स नॉट पर्टिकुलर कि इसने मैंने क्यों बाल कटता है मतलब उससे बढ़ता है. हेयरकट्स होते हैं जो यू कैन हैव इट वंस इन 6 मंथ्स भी तुम ट्रिम कराओ तो दिखता नहीं. थोड़े हेयरकट्स होते हैं, स्पेशली शॉर्ट हेयरकट्स करते हैं या लेयर्स देते हो, द मोमेंट यू फील यू कैन नॉट मैनेज योर हेयर, that time you feel you need a cut. So I say between 4 to 6 weeks maximum, because growth कितनी होती है 4 to 6 months ट्रिम कराते हैं 4 to 6. अच्छा, एंड सेकंड थिंग कि ऑयलिंग क्या मीन्स आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज. कभी लगता है कि ऑयलिंग करना अच्छी चीज है और कभी करते व्हाट यू से. ऑयलिंग बहुत अच्छा है, पर डिपेंड्स तुम ऑयल कहाँ कर रहे हो. ऑयलिंग भी घर पे अगर खाली लगा के नहीं कहाँ, यानी बालों पे कहाँ कर रहे हो. लाइक स्काल्प पे अगर सी नरिशमेंट एज आई सेड तुम्हारे स्काल्प पे जरूरी है. स्काल्प तुम्हारा नरिश रहेगा तो तुम्हारे बाल अच्छे ग्रो होंगे. हम लोग नॉर्मली लोग नहीं, हम लोग भी वैसे करते थे. जब ऑयल लगाते हैं तब हम लोग लीटर के ऑयल लगाते हैं, भर के चिकना शाइनिंग दिखेंगे, जितना ज्यादा बड़े हो जाएंगे. इट इज नॉट दैट. तुम्हारी स्किन की सी स्काल्प इज एक्सटेंशन ऑफ योर स्किन. ये भी स्किन ही है. तुम्हारा कैपेसिटी ऑफ द स्किन एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है. उतना ही एब्जॉर्ब, तुम कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, कितना भी ऑयल लगा लो, वो एब्जॉर्ब जितना करना है उतना ही करेगा. ऐसा नहीं कि मैं भर दूं तो एब्जॉर्ब. ओह वाह, दिस इज वेरी गुड वन. कि मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्रीम लगा दिया तो हम ज्यादा
ज्यादा हो जाए चप्पल वाला, हाँ, ऐसा नहीं है। एक दिन में ही सब कर लो ऐसे नहीं तो एब्सॉर्ब स्किन उतना ही करेगा। ओके प्लस क्या है, एज आई सेड, नरिशमेंट फॉर द स्कैल्प इज जरूरी। हम लोग क्या करते हैं, बालों पे भी लगा लेते हैं, व्हिच आई पर्सनली फील इट इज नॉट हेल्दी। क्योंकि जब तुम बाल वॉश करते हो तो तुम्हारे बालों, एक बार में तो तुम्हारा ऑयल नहीं निकल जाएगा, मिनिमम 2 से 3 बार तुम वॉश करोगे। 2 से 3 बार जब तुम वॉश करोगे तो तुम बाल जब ड्राई करोगे तो तुम्हारे बाल खुद इतने ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि 3 बार शैम्पू करने से, दैट इज अ वेरी गुड टिप। मींस आप पूरे बाल में तेल मत ऐसे 3 बार शैम्पू करने से आपका नेचुरल ऑयल जो बाल का है वो भी निकल जाएगा। तो बाल नरिश होने से ज्यादा स्क्रैप आउट तुम्हारा only scalp में। oh wow that and see honestly मैं 100% कह सकती हूँ कि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा। स्कैल्प पे करो, कीप इट फॉर 1 to 2 hours, मैक्सिमम 3 hours बस है। और लोग तो कहते हैं रात में लगा के सुबह धो लो। That's what's okay। देख थोड़ा क्या होता है, कभी-कभी ये satisfaction नहीं होता। लोग बस हम रात को नहीं लगाएंगे तो नहीं होता, तो इट्स ओके, तुम रात में भी लगाओ। पर ये जो लोग दिन भर लगाते हैं ना, तो वही ऑयल डाल के बाहर भी चले जाते हैं, इट्स नॉट राइट। क्योंकि ऑयल अट्रैक्ट्स डस्ट। हाँ, और जब वो डस्ट अट्रैक्ट करता है तो तुम्हारे बालों में, तो डैंड्रफ होएगा, बिकॉज़ तुम्हारे पोर्स क्लॉग हो गए हैं ऑयल से। नरिश के साथ तो आप नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ऑयल किया बहुत 2 अच्छा से काम 3 किया। घंटा इस मैक्सिमम स्कैल्प पे अच्छा मसाज करो, ऑयल करो, देन सब उसके बाद स्टीम भी करना जरूरी है। स्टीम क्या होगा, पेनिट्रेशन। व्हाट इज जैसा मैंने कहा कि स्किन के लिए हम अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं जिससे पेनिट्रेट होता है प्रोडक्ट, हाँ वैसा ऑयल जब डालते हो हाँ। और जब गर्म करते हो तो तुम्हारे पोर्स ओपन होते हैं, तो तुम्हारा ऑयल पेनिट्रेशन फास्ट होगा। तो या तुम स्टीमर ले लो, आजकल तो तुमको छोटे स्टीमर्स बाजार में मिलते हैं, छोटे स्टीमर लेके तुम पूरे हेयर पे हेल्प समबडी आउट हेल्प करते हो, या फिर तुम गर्म टॉवल लेकर गरम बॉइलिंग वाटर पानी में डाल के नीचे पान के 2-3 बार पान के रख दो। आई मीन गर्म पानी में स्क्वीज करो, पान लो कैप के वैसा, कीप इट फॉर 2-3 मिनट्स, और वही चीज आप रिपीट 2-3 बार बस। दैट्स द पेनिट्रेशन मेथड। Oh. So this is a very good thing Laila told कि सी आप पूरे बाल में से तेल मत लगाइए, स्कैल्प में लगाइए, और दूसरे बाल में तेल लगाने के बाद आप बाहर धूप में जितना जाओगे आप अपने बाल को और डैमेज कर रहे हैं। दैट योर हेयर प्लीज इंश्योर योर हेयर बिकॉज और आई थिंक मर्दों को भी करना चाहिए क्योंकि मर्द बहुत जल्दी जल्दी गंजे हो जाता है। हेयर तो हेयर ही है ना, फिर चाहे वो मर्द I हो can जाए। talk about women hair only because mine is only salon for women. Otherwise, So, good question. So, do you plan? I have any other future में plan to open for men? नहीं, Why? एक्चुअली क्या था, my mom wanted to do it 5-7 years back. पर फिर दिन क्या है, बच्चे छोटे थे, ये काम वो काम, इतना एम्बिशियस नहीं थे कि करना चाहिए, you know. बट अभी तो men लोग भी बहुत कॉन्शियस हो गए अपने लुक को मैं लेकर। 1-2 साल पहले सोची थी करना है, but then I felt कि नहीं, ठीक है, 24 years in this industry, you know, industry is giving me a lot. I have I have clientele who swear by Vedam, so now society is giving it to me. I thought now at this age I want to give back to the society. So मैं सोची हूँ कि let me do something little different. अभी हम खुश हैं, हम happy हैं, अब चलो try करते हैं कि दूसरों को खुशी दे। You wanted to do social work. Yes, that's what. So sweet, very good, very noble cause. Social work for a long time. Like मेरे साल में एटलीस्ट मैं साल में 2 स्टूडेंट्स को फ्री कराती हूँ, और फिर उनको मैं एम्प्लॉय भी कर लेती हूँ अपने पास, और उनकी सैलरी भी शुरू देती So हूँ। sweet. तो आई डू तो दैट। तुम उसको कैसे चूज करती थी? इनको जरूरतमंद है तो It can be my watchman's daughter. It can be somebody. so sweet. So you are giving employment to this. I treat them first. This is very good. अगर हर कोई जिनका होटल है या इस टाइप के जो भी टाइप के बिजनेस अगर ऐसा करने लगे तो it's very So good. I train them first. Hmm. They are with me. I train them, and then I give them a job in my salon. And And then you get lot of blessings and naturally वो आपको रिटर्न में भी सर्विस करके दे देते हैं। So sweet, बहुत जरूरी है। give it back to them. That's why I always call Laila is always ready for help and kindness, anything. शगुन ये चीज every हर चीज का इलाज लैला के पास है। Laila is Laila only. Smile, yeah, you are very kind and very. I'm planning to start a foundation, inshallah, January. Oh, As I said, I've been working for this. Personally, मैं कर रही हूँ. Plus, I was a part of Aga Khan Network and Aga Khan Alliance, where we were since I'm an Aga Khani.
and we were working for the community which itself. हाँ. community में Our हमारा kind of the community को लेके बहुत positive. हाँ, community में हमारा एक alliance है, which is the Beauty and Mehendi Alliance, जिसके साथ में around 7-8 साल से काम कर रहे हैं. Okay. This basically helps in developing underprivileged, जिसके भी saloons है, जिसके भी home service करते हैं. आजकल आप देखो home service बहुत है. There are a lot of women wanting home service. तो ये लोग हम लोग जब मैंने used to see their bags, they used to bags carry करते थे. Condition. उनको मालूम नहीं कैसे ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो we all help them out. कम्युनिटी में कि किस तरीके के बैग्स लेना चाहिए. उनको हम लोग ने थोड़ी इंग्लिश सिखाई, थोड़ी कंप्यूटर सिखाई, क्योंकि काम में बहुत अच्छे होंगे पर प्रेजेंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोन उठा के कोई तुमसे अपॉइंटमेंट लो, क्या अपॉइंटमेंट चाहिए, वो बोले से हेलो मैम कैन आई हेल्प यू मैटर्स और व्हाट. इमीडिएटली वो इंसान तुमको देखा नहीं है, पर वो आपका स्टैंडर्ड बताया है. Yeah. So we tried doing all that. So you groom the person in that role. It's not only me. We were a couple of You are a पूरे जने जो हम लोग ऑनररी सर्विस हमारी देते थे. We were blessed हुआ कि हमको प्रिविलेज हुआ कि हम दे सके, क्योंकि आजकल सेवा देने को लोग बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. तो ये हम लोग खुश हैं कि So चलो we got an nice. opportunity. Very good. No, very good thought. I salute for it. Give me high we five. did that. तो वही चीज मेरे को इंस्पायर किया, एंड नाउ आई थॉट कि ये चीज मैं कम्युनिटी के लिए कर रही थी. आई एम नॉट एज अ कम्युनिटी. So now let me I want to be your any time. सवाल ही नहीं है. People like you तो I will need. मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती. For me it's only the thought process कि No, चलो I'm getting lot of motivation, to be very honest. To be very honest. I'm planning to start this foundation. Inshallah, I launch it in January. where I will be, हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम्स करेगा जिससे डोनेशन जाएगा, और हम लोग डोनेशंस करेंगे, और हम लोग ये अंडर प्रिविलेज जो है उनको 10% से 100% तक फंड करेंगे. Wow. I'm planning to take up a lot of institutions. Funds in what sense? For education? Education. For education. Skill Excellent. development. Skill As development. an education, I'm very happy because you must have seen my interview also. Oh yes. Yeah, I wanted like Yes. as I said कि education अगर यहाँ से है, Yes, true. so Yeah. But education, I want to give them skill में education. क्योंकि स्किल देखो थोड़े ऐसे होते हैं. आई एम टारगेटिंग 18 इयर्स टू 35 इयर्स. हाँ. अभी बहुत सारे women हैं who might come across जो अपना own business करना चाहते हैं, they are divorced or they are being left by their या husbands. domestic बहुत उनके पास violence एजुकेशन बहुत 10th पास है या नहीं है, तो उनको भी Self वापस dependent study में है. लाना बहुत डिफिकल्ट है हाँ. कि तुम 10th पास करो, 12th पास नहीं. करो, करके क्या कमाएंगे, कुछ नहीं. ये स्किल तुम सीखोगे, हाँ. 6 महीने में you start getting a salary of 5-7,000. yes तो और confidence भी आएगा, income भी होगी. You become an equal earner in that. That is what we feel कि हम we want to create equal earners. हाँ. I don't say second Good. earner. पहले हम बोलते थे वाइफ है तो सेकंड अर्नर है. हाँ. Now we say no, वाइफ है तो इक्वल अर्नर है. Yes. तो मियाँ जितना कमाता है उतना उतना कमा ही. सकती है, yes yes उतनी कैपेबिलिटी है वो है. तो we are trying कि हमेशा से थी, लेकिन लोगों ने पहचान ही नहीं, नहीं थी. और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारे रसूल अल्लाह ने एग्जैक्टली. तो अपॉर्चुनिटी, ये सब इंस्पिरेशन वहाँ से ही तो आता है. हाँ. रसूलुल्लाह से आता है, आगा खान के हमारे फरमान से फरमान से inspiration आता है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो एक्सपैंड इवन अगर हिंदू मैथोलॉजी लो तो सीता वाज वेरी स्ट्रांग इन इट. it's all about helping others. So now I want to grow with helping others. I want to learn more. जब मुझे दूसरों को खुशी देना, तो इंशाल्लाह I will start that, and that time तो सवाल ही है. All the best. I'm Have with to you be all. there. Yeah, I will. Yes. I will. So that's a promise I take it from you. Yeah, my goodness. I sir, I will. Amir Jabir ka hash, I will. Amir, we are missing you. Your hash, I will. I really am liking that. I know. When me and Leila and Shakura. Me and Lana, yes. Me too ka, I will. Amir, we are with you. Yes, true. लैला, ये बताओ मेरे को कि मेरे को एक मिथ है, मेरे अपने दिल की बात पूछ रही हूँ, बहुत से लोगों, लेडीज की भी हो सकती है, कि रेजर यूज करना कितना रॉन्ग है. जो लेडीज का भी रेजर आता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी मैंने देखा है वो इजी हो जाता है, लेकिन आप नहाते नहाते आपने. और वैक्सिंग, तो तुम क्या लोगों को सजेशन दोगी, वैक्सिंग कराना चाहिए कि रेजर से भी आप अपना मतलब दो रेजर में दो होती है. एक जो रेगुलर रेजर होता है जो हम लोग शेविंग के जो जेल्स यूज करते हैं, और एक आता है एपिलेटर. इट्स अ न्यू थिंग जिसका एपिलेटर अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये रेजर जो होता है, ये रेजर तुम्हारे बाल सिर्फ स्किन के ऊपर से निकालते हैं, उसमें से नहीं निकालता है. उससे क्या होता है, दो चीज होती है. तुम्हारी स्किन ड्राई होती है, सेकेंडली एक उसमें से 2 बाल आने के चांसेस होते हैं, और बाल ठीक आते हैं नेक्स्ट टाइम में, लेकिन ठीक आता है रेजर. ओह हाँ, जैसे ना बाल इतना. तो दैट इज हाउ रेजर नाउ. बट बोलते हैं ना यार, जब
बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको शेव कर देते जितनी बार हमारी जिंदा कराओगे कि उनकी रेजर करते तो थिक बाल आते हैं। हाँ दैट इज द ट्रूथ होता है। एपिलेटर जो है आप घर पे यूज कर सकते हैं, व्हिच इज लाइक वैक्सिंग, जो तुम्हारे हाँ। रूट्स पे से बाल निकालता है वो without आजकल इस टाइप से आने लग गई है। नेक्स्ट टिप्स नहीं, इट्स एन एपिलेटर, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा एपिलेटर इज इंस्ट्रूमेंट ओके आई विल ऐड इन दैट तो दिस इज जो रूट्स पे से निकालता है, सो व्हेन दैट यू कैन यूज इट। अच्छा लाइक जैसे मतलब शेवर आता है उससे कैसा कैसा? you go online or you go to the market, Okay. this is an applicator. जो तुम्हारे process, but that is not vaccine is good वैक्सिंग इज 100% गुड, But, बट वैक्सिंग करने से सी वैक्स में भी दो टाइप के वैक्सीन आते हैं। एक है शुगर वैक्स जो सालों से यूज हाँ, करते चीनी हैं, का। नाउ वी हैव इज अ लिपोसोलुबल वैक्स व्हिच इज मच बेटर, व्हिच इज मोर स्मूदर। गरम होता है वैक्स, पर वो लिपोसोलुबल वैक्स जब आप लगाते हो तो तुमको गरम नहीं लगता। अच्छा तो तुमको वो वैक्सीन का जो डर, लोग हाँ। वैक्सीन से डरते गरम हाँ, लगता है, गरम वो खींचता गरम है, खींचे हाँ। और वो खींचे जाता है। ये दोनों चीज नहीं होती नहीं है, होती, लिपोसोलुबल smooth ही हो वैक्स जाता है। बाल स्किन तुम्हारी स्मूथ होती है क्योंकि उसमें एलो होता है। ओके तो स्किन स्मूथ भी होती है, गरम नहीं लगता है और खींचने पर भी ज्यादा खींचे नहीं जाता और तुम्हारा टैन भी निकालता है स्किन से। व्हाट अबाउट आर्मपिट? ये जो कभी मैंने देखा है, मेरे को भी प्रॉब्लम ना, काले काले से जो हो जाते हैं और से किसी का देखो तो एकदम नीट वाइट। इट्स अगेन मेंटेनिंग एंड हाइजीन, दो चीज होती है। हार्मोनल पसीने से पसीने से होता है। कभी कभी बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स ऐसे तुम्हारे एक्टिव होते हैं तो तुम्हारा स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग बहुत होती है काफी। हाँ और स्मेल भी हाँ, तो तुम जब स्वेट करते हो, बहुत टाइम पे करते हो और ये वो तुम्हारे कपड़े पे आ जाता है, ब्लाउज पे हाँ कब जाते हैं और वो वेटनेस माई पड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पिगमेंटेशंस होता है। तो आजकल आर्मपिट्स के पैड्स होते हैं, अगर तुमको ऐसा लगता है तुम कुछ जगह पे जा रहे हो, तुम स्लीवलेस नहीं पहन रहे हो, तो मेरा आर्मपिट्स का अच्छा, पैड, I'm not aware. yes you get it in the market, वो पैड रख लो तो क्या एब्सॉर्ब हो जाता है तुम्हारा। So Oh, those wow. people who wear perspire, Do we call it with- perspire, it's a much better word. Okay. So वो perspire और not उनके लिए पैड भी छोटे से होते हैं Oh wow. वो स्टिक हो जाते हैं। Okay, this is much better कि हमारे कपड़े खराब कहाँ मिलते होंगे? मेडिकल स्टोर्स? मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में मिलेंगे तुमको। Oh wow, मेरे को नहीं मालूम बहुत था। ऐसे this you can use it। Very useful things हैं, हमारे realized it now. तो कपड़े तुम्हारे खराब नहीं रहेंगे, प्लस तुम्हारे अंदर तुम्हारी पिगमेंटेशन अगर वो रीजन से हो रहा है तो नहीं। काले भी होंगे और नीट रहेंगे। वैक्स कंटिन्यूस रेगुलर और कितने गैप क्योंकि आर्मपिट में एकदम 15 से 20 क्योंकि वैक्सीन करने वो आना भी तो उसके अंदर 15 से 20 दिन में आ जाते हैं। ग्रोथ ठीक नहीं होती है पर एटलीस्ट देयर इज तो वो 20 दिन में आ जाते हैं आराम से। और फिर वी हैव अंडर आर्म ट्रीटमेंट्स, एंटी टैन ट्रीटमेंट्स फॉर अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स में एंटी टैन ट्रीटमेंट्स देते हैं जहाँ पे क्लींजिंग होता है, थोड़ा स्टीम देते हैं। ओके अपना एंटी टैन पैक्स ओवर दैट वाओ भी होता है। मतलब ये नहीं कि खाली वैक्सीन करके भेज दिया। Nowadays everybody is very conscious, they are wearing sleeveless, they don't want मैं तो कर देते हैं sleeveless में, तो they all want to be very conscious that it looks neat। ओके और व्हाट अबाउट मैनिक्योर एंड पेडिक्योर? बहुत से लोग जैसे मेरे जैसे फालतू लोग जिनको बकबक करते हैं क्या जरूरत चौकी, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज मैनिक्योर एंड पेडिक्योर? Most important is your manicure pedicure। अगर More आप than जानना face। चाहते हो कि एक इंसान कितना अपने आप का ख्याल रखता है तो पहले उनके शूज और फीट देखो। अगर उनके शूज अच्छे रहे और उनके फीट क्लीन रहे, दैट मीन दैट पर्सन लव्स देमसेल्फ। तो दैट इज द सब बेचारे हमारे पाँव, हमारा वजन सारा टाइम लेके करके आप उसकी सेवा नहीं कर रहे। पिगमेंटेशन और ये सब जब होता है तो तुम उसको हर चीज़ मतलब सिर्फ इतना ही आप अपने को ब्यूटीफुल मत बनाओ। स्टार्ट फ्रॉम योर फीट, From toe to head, not from head to toe. so feet is very important for you. So feet has to be neat. आजकल the lot of women I think goes a lot of men जो जाते हैं your fingers, see तुम किसी से भी तुम बात करते हो, it's always your expression, your hands, your मेरे तो बहुत so ही your करते fingers have to be see her beautiful hand. so your hands have to be very neat. So it's not necessary you have to get a nail, a Polish, extension yeah. done on that. जरूरी नहीं है कि Groom. nails बड़े करना चाहिए, छोटे भी रख सकते हो, but at least you make sure cuticles नहीं है। I make sure that you apply moisturizer। एक moisturizer तुम्हारे पर्स में हमेशा रखो, keep on applying on your hands because बार-बार जैसे मैं दिन में 10 से 12 pickles करती हूँ, I wash my hand, so I make sure the moisture is always just I moisture my hands and fingers। Your age is shown first with your hands। तुम्हारी एज तुम्हारी हाथों से दिखती है, Not हाथ और तुम्हारे आईज, तुम्हारे क्रो फीट एंड योर हैंड्स। ये दो चीज से तुम्हारी बहुत केयर करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर हैंड्स हैव टू बी ब्यूटीफुल। Pedicure and manicure is one. Most important, very very important।
See, our talk is going very interesting I और never ending talk है. So though friends, let me tell you, there's more surprise coming up, and today is 2nd of November. Mr. Shah Rukh Khan, the great, legendary, famous Bollywood actor's birthday. So let's wish Laila happy birthday Shah Rukh Khan. पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, हम फिर आएंगे. See ya.